Hello everyone, welcome you all at Indian Language and Learning from Unacademy. Let's start with a brief introduction about myself. My name is Ravi Sir and I have 8 years of teaching experience in the field of GATE and English Success Examination. Qualified GATE 5 times and also State English Success Examination of Uttar Pradesh and some marker of issues like NPPC, SAIL, BHL, Coal India Limited. Okay, all these. First of all, you all need to download an Academy Learning app, and after downloading this app, uh, you will get daily live classes. You will get daily live classes, live test and quizzes, structured courses, unlimited access. Live classes, live test and quizzes, unlimited. Uh, तो what is the benefit? आपके पास जो courses available हैं, आप live classes भी देख सकते हैं, आप recorded session भी देख सकते हैं, but अगर आप live class attend करते हैं, then you आप अपने जो भी educator जिनसे भी आप class कर रहे हैं, you can ask your doubt, like you can participate in the test, polls created in the class, quizzes, कहने मतलब there will be a full interactive class अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं। अदरवाइज अगर किसी वजह से आपने लाइव क्लासेस मिस कर दी तो यू विल आल्सो बी प्रोवाइडेड विद रिकॉर्डेड सेशंस दैट यू कैन वॉच ऑन योर टाइम ऑन योर कंफर्ट। अपने टाइम और कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसे कभी भी आप वॉच कर सकते हैं। You will also get live tests and quizzes to evaluate yourself, to evaluate your preparation. You participate in the mock test and mock test and quizzes, right? To get the real feel of the examination, to get the real feel of जो भी आपका रियल एनवायरमेंट है एग्जामिनेशन का जो भी कोर्सेस हैं अकेडमी पे फॉर गेट एंड इंग्लिश साइंसेज दैट आर डिजाइंड एज पर योर एग्जामिनेशन सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न राइट whether you are going for gate or you are going for engineering sciences you will get chance to learn with other top educators across India. The courses at Unacademy for gate and engineering sciences examination for different branches, right? There are different number of batches running throughout the year. Like for mechanical engineering, there are 24 courses running. For electrical engineering, there are 18 courses running. Okay, throughout the year. These are the courses running throughout the year. You can join any course. Okay. Electronics communication, there are 10 courses like that. For different branches, there are different number of courses. You can join any batch and get the benefit. Now there are two kinds of courses that are available. Two kinds of subscription rather. One is the plus subscription, other is the iconic subscription. So what is the plus subscription? In the plus subscription, you will get India's best educator, interactive live classes, structured courses and PDFs, live test time. Same thing you will get in iconic as well. Best educator, interactive live classes, structured courses and PDFs. आप जो भी कोर्स अटेंड करते हैं आपको उसका पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। नाउ then what is the difference between iconic and plus subscription? In the iconic subscription, you will get personal coach. In the iconic subscription, you will get personal coach. Now, with your personal coach, you can have one-to-one discussion. You can have one-to-one discussion about your doubts, about your strategy of the examination, about your doubts and strategy of the examination. There will be personalized test analysis, study planner you will get, and preparatory study. जब भी आप एग्जामिनेशन में अगर आप बेटर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको अगर आप बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको एक पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है एट एवरी स्टेप दैट यू विल गेट इन आइकॉनिक सब्जेक्ट राइट नॉट जस्ट सिलेक्शन बट फॉर better rank if you want a better rank then you should go for iconic subscription आप कोई भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं और आइकॉनिक भी ले सकते हैं but this is most suitable for you if you are going for better rank also. Of course the subscription fees अलग अलग है अलग अलग कोर्सेज के लिए राइट फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन 24 मंथ द फीस 44,000 लेकिन अगर आप अलग अलग कोर्स अवेलेबल है 1 3 6 12 18 कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं राइट कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं एंड यू कैन avail the benefit available at home right but if you use this code Ravi PY this is your referral code if you use this referral code Ravi PY you will get 10% discount on your total subscription fees
चाहे जो कोर्स लेते हैं 13612 for 24 months the fees are 44,000 rupees. Now this will become as 39,600. For iconic subscription, the fee for 12 months is 50,250. लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं जैसे रेफरल कोड Ravi PY, you will get 10% discount and you have to pay 45,225 rupees. So for 24 months, this is 66,600 rupees. From 28th December, there is a batch going to start at 6 p.m. That is today. Okay, you can join this batch and uh, avail your benefits. Now there is also an academic comeback is going on. An academic comeback, and that is on 29th December. You can enroll that on free. You can enroll for this an academic comeback. That is the most gamified टेस्ट सीरीज जो आपका फोर्टनाइटली चल रहा है आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन विन अट्रैक्टिव प्राइजेस आल्सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन दैट इज वी आर डिस्कसिंग कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे राइट थ्रू आउट द फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स कर लेंगे इसमें नाउ लेट जो हम उसी को हम आज आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे all these lectures, all these problems we discussed in previous. So let's start from here now. Okay, I'll give you. You have 1 minute to read this question and try to solve this question. Within 2 minutes, I need answer for this question. Hmm. Stream and velocity potential functions are for two-dimensional flow field given by u equals to 2x and v equals to minus 2y. U and v are given, so you have to find velocity or sorry, stream function and velocity potential. Okay, now let us try solving this question.
Okay. Now, what is streamline equation? Hmm. Equation for stream function dx by u, that is dy by. And what is u? U is given as 2x and minus 2. Dx by 2x, dy by minus. Okay. तो आप सॉल्व कर सकते हैं dx by x, that is minus dy by. आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे यानी विल गेट द आंसर दैट इज ln x and that is equals to minus ln y plus ln, that is xy equals to. So this is stream function is xy. एक कांस्टेंट आ सकता है जो हमारा फंक्शन होगा, जो ऑप्शंस आपको गिवन है, इन ऑप्शंस में से अगर आप देखेंगे दैट इज 2x, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। फाइव आपको फाइंड करने की जरूरत, लेकिन फिर भी हम फाइव फाइंड करेंगे। ओके, जो आपका ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपका यही मैच कर रहा है। नाउ फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, एक वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज 0, and psi is function of phi is function of xy, d psi is 0 for a particular streamline, for a particular d psi is 0 for a particular velocity, d psi is particular, d psi 0 कर दिया, that is del psi by del x into dx plus del psi by del y into dy, and that is equals to 0. What is dy by dx from here? Dy by dx from here is minus d psi by dx is del psi by del x is minus u minus v, that is minus u by. What is u by v? 2x by 2y. Both are 2x by 2y, that is x by y. This is x by y. Simply this is x by, and that is y dy, and that is equals to x, and y square, okay, y square that is x square. Difference is x1 by 2, y square by 2, and that is equals to, and that is equals to some constant. X square by 2, y square by 2, that is equals to some constant, and that is phi equals to x square minus, ये हो गया आपका phi equals to x square minus y square, और ये हो जाएगा 2। आपके ऑप्शंस में यही गिवन है फ्रॉम द ऑप्शंस, राइट। आप देख के उसको मैच कर लेंगे। हो सकता है जो सी है, इस सी की वैल्यू 1/2, अगर आपको पॉइंट्स गिवन होते हैं, इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू रख लेते हैं। सपोज एक्स और वाई की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाइड एक्स और वाई की वैल्यू रखने के बाद सी की वैल्यू है 1/2, 5 साइज 2x। वो आपको गिवन नहीं था, लेकिन ऑप्शन में आपको सिर्फ यही मैचिंग कर रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड। आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन गिवन है, फाई गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड स्ट्रीम फंक्शन आपको फाइंड करना है, पोटेंशियल फंक्शन आपको। इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए हैं। यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस।
phi is given and you have to find stream function. Let us try the Cauchy Riemann equation is करेंगे CR equation simply and you will find the solution. What is phi is given as? Phi is given as 2xy. Now del phi by what is u? What is u? Is minus d psi by dx. Sorry, del psi by del x. Is del psi by del x. And what is u? Del psi by del x. That is minus 2y. And this is u. Our u what is what or u क्या होता है del psi by del u is del psi by del uh, that means and that is equals to minus 2y. जो del psi by del y है यहाँ से आप psi फाइंड कर लेंगे that will be 2 into y square by 2 plus that is psi equals to sorry function of x y square plus function of y square plus function of y स्क्वायर प्लस ए फंक्शन ऑफ x जब इसको यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो साई मिल जाएगा आपको y स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू तो कैंसिल माइनस माइनस पहले कैंसिल हुआ दैट इज फंक्शन ऑफ ये हमारी होगी इक्वेशन 1। अब हमें पता है व्हाट इज डेल साई बाय डेल एक्स डेल साई बाय डेल एक्स व्हाट इज डेल साई बाय डेल एक्स फ्रॉम हियर that is y this term will be 0 that is f dash x and what is del psi by del x that is v and what is v minus del psi by del y. What is del psi by del y that is 2 del psi by del y is 2x and this is minus 2x यानी f dash x जो आपका हो गया यहाँ से this f dash x is minus यानी f x is minus x square by 2 तो अगर ये डिफरेंशिएशन है दैट इज minus x okay so x square plus then what is stream function from equation 1 from equation 1 from equation 1 what is stream function from equation 1 this is y square minus x square plus y square minus x square y square minus x square plus y square minus x square plus this equation is option is y square minus x square plus constant that is this option is so you simply use CR equation तो याद है ठीक है अदरवाइज आपको यहाँ से CR equation is del psi by del x equals to del phi by y okay? And del phi by del phi equals to minus del psi by this is CR Cauchy Riemann अगर ये आगे ठीक है अदरवाइज ऐसे आप कर सकते हैं कुछ तो कुछ there is nothing big in this simply ऐसे solve you can simply solve all this so I hope you got the point here how we solve अगर आपको पोटेंशियल फंक्शन गिवन है और स्ट्रीम फंक्शन पूछा गया तब ऐसे इसको नेक्स्ट two flows are specified as u equals to y v equals to minus 3 by 2x b दो फ्लो है a और b उसमें u और b की वैल्यू गिवन है x y स्क्वायर y b equals to x स्क्वायर इसमें आपको पूछा गया है इसमें आपको पूछा गया है कि फ्लो रोटेशनल है इरोटेशनल है कौन सा फ्लो है
दिस इज द जस्ट ट्राई कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको आप फाइंड करेंगे। यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए रोटेशनल कब होता है, फ्लो रोटेशनल कब होता है। ठीक है, सिंपली यू हैव टू फाइंड u और v में है फंक्शन, x और y में है, दैट मीन्स देयर इज नो z का, आपको कोई भी z कंपोनेंट नहीं है, तो सिर्फ आपको एक ही रोटेशनल कंपोनेंट फाइंड करना है, दैट इज ओमेगा z। यू जस्ट हैव टू फाइंड ओमेगा z, जस्ट हैव टू फाइंड ओमेगा z, you just have to find omega. And what is omega z? 1 by 2 del v by del x minus del u by del u by del x minus del u by del del u by del x by del u by this you have to find, and you will see कि u के लिए रोटेशन है, रोटेशन है। What is u? U is given as for a, u is given as y, u equals to y, and b equals to minus 3 by 2 x minus 3 by 2। ठीक, और b के लिए, और b एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, आप सिंपली ओमेगा जेड इसके लिए फाइंड करेंगे, और ओमेगा जेड रेशनल कंपोनेंट जेड डायरेक्शन एक्स और वाई में आपको प्लान किया गया है, तो आपको जो फाइंड करना है दैट इज इन ओमेगा जेड, जेड डायरेक्शन द ओमेगा। व्हाट विल बी दैट, del v by del x 1 by 2। व्हाट इज del v by del x? minus 3 by 2 minus del u by del y, that is minus, that is minus 1, that is minus 5 by, that is omega, that is not equals to 0, that means this is rotation। so rotational component है, this flow is rotational। omega z second वाले के लिए 1 by 2 del v by del x, और sorry del v by del x 2xy minus del u by del y 2xy, and that is equals to 0, and that is equals to 0, that means this flow is, इसका rotational component 0 है, this flow is irrotation, this flow is irrotation। A रोटेशनल है, B आपका irrotational, A is rotational while B is irrotational option is। आपको सिंपली रोटेशनल कंपोनेंट फाइंड करना है, you can find that। This is how you can find the flow of a rotational है या irrotational है, simply you can find from the rotational component। What about this? Next one, I'll give you 1 minute to solve this question as well। Okay, you have 1 minute to read this question। A vertical water pipe 1.5 meter long, tapered from 75 mm diameter at the bottom to 150 mm diameter at the top,
At the top diameter is 150, at the bottom diameter is 75. The rate of flow is 50 liters per second upwards. If the if the pressure at the bottom end is 150 kilonewton per meter square, the pressure at the top pressure at the top will be there. You try to draw the diagram and then solve this question. So you just take your time. 1 minute and then I'll give you the okay. You just read this question and try to solve. सिंपल क्वेश्चन है. आपको मैंने बताया था जहां पे भी आपको इन्वॉल्व है, प्रेशर इन्वॉल्व है, वेलोसिटी इन्वॉल्व है, डिस्चार्ज इन्वॉल्व है, हाइट इन्वॉल्व है, सिंपली आपका इसका मतलब ये है दैट यू हैव टू यूज बर्नौलीज एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन. सिंपल आप समझ जाएंगे. हम बर्नौली से कंटिन्यूटी इक्वेशन करने से हमें कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हम स्टेप पे आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा कैसे. आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे लेंथ गिवन है, एरियाज गिवन है, डिस्चार्ज गिवन है, प्रेशर पूछा गया है. दैट मीन्स यू will use Bernoulli's equation. That is this one. Solution this. एक टेपर्ड आपके पास यहाँ पे पाइप है. Diameter is there is a tapered diameter pipe. Diameter here is 150 mm and here diameter is 75. Here diameter is 75. Here diameter is 75. आपसे कहा गया flow is upwards. Flow is upwards. That means this is point 1 here, section 1 and this is section 2. Suppose this is our datum. इसको हमने datum ले लिया. This is our datum and this height is given as 1.5 meter. No, this height is 1.5. So the pressure at the bottom is 150 kilonewton per meter square. Pressure here, that is P1 is given as 150 kilonewton per meter square. आपसे पूछा गया what is the pressure at the top, that is at section. आप सिंपली बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे 1 और 2 के बीच में. Applying Bernoulli's equation. Applying Bernoulli's equation between section 1 and section 2. Applying Bernoulli's equation between section 1 and 2, that is P1 by rho g plus P1 square by 2g plus Z1, that is equals to P2 by rho g plus P2 square by 2g plus Z2. Okay, Z1 is 0 because that is our datum. P1 by rho g is given as 150. हमें यहाँ से चाहिए P2 by rho g हमारा कितना होगा. This P bond here from here and that will be P1 by rho g plus P1 square by 2g minus P2 square by 2g minus Z. Okay. This much. Z1 is ये आपको चाहिए
P1 हमें known है that is 150. और V1 V2 मिल जाएगा. Z1 is 1.5. Now what is V1 and V2? How you will find V1 and V2? हमें discharge given है. Discharge given as 50 liters upwards. Q is given as 50 liter per second. That is 50 liter per second. That is 50 into 10 to the minus 3 meter cube per second. जो V1 हो जाएगा, that will be Q by A1. And what is A1? 5 by 4 D1 square. What is D1? D1 is 0.75 mm. And 0.75 mm या फिर 0.075 0.075. This is it. यहाँ से आपको V1 मिल जाएगा. And what is V2? Q by A2. That is 50 to 10 to the minus 3 by 5 by 4 D square. That is 0.15 5 by 4 D square. तो यहाँ से आपको V1 V2 मिल जाएगा. Z and Z2 is given as 1.5 मीटर. Z1 है, Z2 है. यहाँ से P2 by rho g आपको यहाँ पे सिंपली P2 by rho g मिल जाएगा. And that will come around. Let us solve this. Okay, just do the calculation and tell me the answer. And 11.31 something. 11.31. You check the calculation meter per second. What is Z2? V2 is something 2.829. We put all these things and here it will come as 19.91. Okay, this is data here. Press ahead. That is now comes out meters. Then what is P2 from here? From here, P2 will be 195.367 kilo Pascal. Answer is, and the answer is simply हमने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई किया, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई किया. From continuity, from continuity, just check this calculation and this is the answer. This is the procedure to solve these questions. I hope you understood it. Okay? I hope you got it out.
Okay, next one. You have 1 minute to read this question and another 1 minute to solve. Then I will start. Okay, you just try and solve this. The water is coming out from the tap and falls vertically downward at the tap opening. The stream diameter is 20 meters with uniform velocity 2 meter per second. Assuming steady and in-viscid flow, steady, steady in-viscid flow, constant pressure atmosphere everywhere. Constant atmospheric pressure everywhere. Right? Constant atmospheric pressure everywhere. And neglecting curvature and surface tension effects, the diameter of the stream, zero point 0.5 meter below the tap opening, is nearly, okay, 0.5 meter is. कुछ नहीं करना है, ऐसे सिंपल मैं आपको हिंट देता हूँ, दैट इज आपको यहाँ पे सिंपल वहां पे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, आपको सिर्फ बर्नौलीज अप्लाई करना है। यू हैव टू अप्लाई बर्नौली एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, सिंपली आपको यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करने से ही मिल जाएगा सबको। Water is coming out from a tap and falls vertically downward at the tap opening. The stream diameter is something like this. This is 20 mm. This is 20 and uniform velocity is 2 meter per second. यहाँ पे जो velocity है that is 2 meter per second. Here the velocity is 4 meter per second. With uniform velocity 2 meter per second. Assuming in-viscid flow, constant pressure everywhere, neglecting the curvature and surface tension effects, diameter of the stream is 0.5. I think something is missing in this question. Velocity here was 4 meter per second. Here velocity was 2 meter. Assuming steady in-viscid flow, constant pressure atmosphere everywhere, neglecting the curvature and surface tension effect, the diameter of the stream is 0.5 meter below the tap opening. Nearly. I think something is missing in this question. This is 2 meter per second. This is not given. This is given as 2 meter per second. This is given as 2 meter per second. कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे भी सिंपल वन इक्वेशन अप्लाई करना। दिस इज वन, दिस तो वन कह लेंगे, इसको हम कह लेंगे दिस इज वन है। दोनों सेक्शन में वन इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वन। डायमीटर 20 mm, और आपको ये भी कहा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवरीवेयर। P1 इसको अगर वन कह लिया हमने, इसको वन, इसको P1 एंड P2, दैट इज atmospheric pressure, and here also this is atmospheric pressure। दोनों जगह सेम है। एक जगह V1 आपको गिवन है, एक जगह V2 आपको फाइंड करना है। डायमीटर है, तो पहले तो आपको बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई
बर्नौलीज इक्वेशन तो आपको यहाँ पे V2 मिल जाएगा। एक मिनट और प्रेस करेगा। दैट वाज फॉर जस्ट फॉर यू। ये है टैग, ये हाइट गिवन है 0.5, यहाँ पे V1 गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड में। अगर इसको हमने 1 कह लिया इसको, अब प्रेशर हर जगह पे सेम है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वाटर का जो वाटर फॉल कर रहा है, यहाँ पे जो वाटर फॉल कर रहा है ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, V1 है। और यहाँ पे हमने सपोज, यहाँ पे एरिया सपोज हमने के लिए A1 और यहाँ पे एरिया A2। दिस A1 जो आपका डायमीटर है D1 इज गिवन एज 20, तो ये डायमीटर गिवन है। सिंपली अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन हम अप्लाई कर लेंगे। अप्लाइंग बर्नौलीज P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। Okay, P1 by rho g, P2 by rho g, that is 0. V1 square by 2G is given, that is 2 meter per second. Z1, what is Z1? Z1 is given as, अगर इसको हमने datum कह लिया, this is our datum. If this is our datum, अगर इसको datum कह लिया, तो Z1 is 0 and Z2 is minus 0.5. This is 0 and Z2 is minus 0.5, 0.05, 0.5. Z2 is 0. minus 0.5. तो यहाँ को आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम हियर यू विल गेट V2 एंड दैट विल बी, आई विल राइट डायरेक्टली, दैट इज 3.74। दिस इज 3.74। इसी क्वेश्चन से आप सॉल्व कर लेंगे। V1 आपको गिवन है, V1 इज 2 मीटर पर सेकंड, V1 इज गिवन 2 मीटर पर सेकंड। V2 आपको मिल जाएगा। नाउ फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 equals to A2 V2, A1 V1 equals to A2 V2, A1 V1 equals to A2 V2. Now from here you can find A2, that is A1 V1 by, and the A2 will come as, but what is A2? 5 by 4 V2 square equals to A1 V1 by V2. What is A1? 5 by 4 D1 square, and D1 square is given as 20. From here you will find D2 as, that is 14.6, 14.62, 14.62, 14. 14.60. Okay. You will get the answer from here, and that will be 15.62. 14.62. And that will be the 15.6. 14.6. Okay, so we got the answer.
Next one. A conical diffuser 3 meter long is placed vertically. The velocity at the top, that is at the entry, is 4 meter per second, and at the lower end is 2 meter per second. The pressure head at the top is 2 meter of the oil flowing through the diffuser. 2 meter of the oil flowing through the diffuser, that is pressure head given as P1 by P by rho g. Okay, in the meter that is given, that means this is given as pressure head, not the pressure. ये pressure नहीं है, आपका pressure head given है. Okay. The head loss in the diffuser is 0.4 meter of the oil. Head loss HL given है. The pressure head at the exit. ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला से अप्लाई करना है आपको. आप इसको जल्दी से सॉल्व करें. Okay, you will simply solve this question. Okay, सिंपल बर्नौली इक्वेशन है, इसमें कुछ नहीं करना है. डिफ्यूजर है और डिफ्यूजर इज 3 मीटर लॉन्ग. Diffuser area is increasing, this is 3 meter long. 3. दोनों जगह velocity given है 4 meter per second and 2 meter per second. 4 meter per second and here 2 meter. यहाँ पे pressure given है P by rho g. Pressure is given as 2 meter. Pressure is given as 2 meter at the entry, I guess. The pressure head at the top is 2 meter at the top. Pressure head at the exit P1 by rho g है, इसको अगर हमने 1 कह लिया तो 2 कह लिया, then what is P2 by rho g हमें फाइंड करना है. सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे, you will find the apply the Bernoulli equation and you will find the answer. That is P1 by rho g plus P1 square by 2g plus Z1, and that is P2 by rho g plus P2 square by 2g Z2 plus आपका head loss. यहाँ पे head loss भी given है. Head loss in the diffuser is 0.4 meter. Everything else is given here. इसको हमने अपना डेटम कह लिया. इसको डेटम कह लेंगे तो Z1 हो जाएगा. Z1 is 3 meter and Z2 डेटम किसी कह सकते हैं, Z2 2 कह लेंगे. अगर हमने 1 को डेटम कह लिया होता तो Z1 is 0 and Z2 is -3, वो भी आपका वो इतना ही आता. From here we will solve for P2 by rho g. Everything else is 0. Head loss is given as 0.4. जो भी आया इस डिफिजन में होगा. Okay, you will simply solve this and tell me the outcome. And that will come as 5.211 मीटर ऑफ. मीटर में आएगा, सब कुछ मीटर ऑफ फाइल में है. प्रेशर हेड पहले का भी, इसलिए 5.211 मीटर ऑफ.
This is 5.21. Simply application परमिट अप्लाई करना था. Next problem. A fluid jet is discharging from 100 mm nozzle and the vena contractor formed has diameter of 90 mm. If the coefficient of velocity is 9x, then coefficient of discharge. Simple question है. अगर आपको पता है what is coefficient of contraction, coefficient of contraction CC, and that is equals to area at vena contractor, area at vena contractor, and divided by area at exit of nozzle, area at the exit of nozzle. Sorry, area at the exit of nozzle, area at the exit of nozzle, area at the vena contractor and area at the exit of, area at vena contractor and area at the exit of, area at the vena contractor, area at the exit of. Okay, area at the exit of. What is area at vena contractor? 5 by 4 d square, that is 90 square. 5 by 4, 90 square, that is 5 by 4 100 square, and that is 0.81. Now this is coefficient of contraction. Coefficient of discharge पूछा गया आपसे. Coefficient of discharge is dc into cv. Coefficient of velocity 0.81 into 0.98. This is given. Coefficient of velocity is given as 0.98. That is 0.81 into 0.98. 0.81 0.81 into 0.7938, that is 0.7938, that is 0.79. This is our coefficient of. This is coefficient of. Next one. थोड़ा सोचना है इस क्वेश्चन में, राइट. इसमें थोड़ा सा जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा. कैसे आप फाइंड करते हैं जो आपका जनरल मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको भी आपको यूज करना पड़ेगा. दिस इज सिंपल. Constant head water tank has one of its vertical sides two identical on one of its vertical sides. One of its vertical sides. एक water tank है, इसके एक साइड में two identical small orifices issuing two horizontal jets in the same vertical plane. दो horizontal दो orifice है, दोनों से water निकल रहा है. In the same horizontal, in the same vertical plane. The vertical distance between the centers of the orifice is 1.5 meter. The jet trajectory intersects at the 0.5 meter below the lower orifice. Below the lower orifice. What is the approximate height of water level in the tank above the point of intersection of trajectory? In the tank above the point of intersection of. Okay. So I'll give you once again. I'll give you 1 minute to read this question. Try to
Understand what is given, what is being said here. Just, just see what is given. क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, एक वाटर टैंक है, यू हैव अ वी हैव अ वाटर टैंक, और यहाँ पे दो ऑरिफिस, एक ऑरिफिस यहाँ से डिस्चार्ज करती है, सपोज दिस इज वन, और इसकी वेलोसिटी ले लेंगे, और ये डिस्चार्ज करती है समथिंग लाइक, और एक यहाँ पे है, दिस इज टू, और इसकी भी वेलोसिटी है v2, एंड दैट डिस्चार्ज समवेयर लाइक, और जहाँ पे ये कट करती है, दिस डिस्टेंस इज 0.5 and this distance is given as 1.5 and 1 point. If this is v and v2 is 0.5, ये जो डिस्टेंस गिवन है, दिस डिस्टेंस इज 0.5, और उन दोनों ऑरिफिस के बीच में, और ये है आपका वाटर, वाटर, यहाँ से ये हाइट आपसे इस इस लेवल से यहाँ तक की जो हाइट है, इस हाइट इज गिवन से, तो आपको h कितना है ये, जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, वर्टिकल ट्रैजेक्टरी है जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर. ये है 0.5 और ये है 1. यहाँ पे वेलोसिटीज, तो जहाँ पे ट्रेजेक्टरी ये कट कर रही है, ये डिस्टेंस आपके मैंने 0.5, इसके ऊपर 1.5, v1 v2, आपसे पूछा गया है कि दैट व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ वाटर लेवल, ये जो h है, ये h कितना होगा, ये इस क्वेश्चन में, ये h कितना होगा, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन. फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा इसमें आपके और भी कंसेप्ट यूज होंगे. होगा क्या कि सपोज कि हमने मान लिया ये जो v1 है, v1 को पॉइंट ये आपका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इस जो जेट v1 की जेट है, वन की जो जेट है, जेट वन जो है, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक आने के लिए टाइम t1 लगा. लेट्स से assume jet 1 takes t1 time to reach point of intersection, and jet 2 takes t2 time. ओके, तो हमारी जो डिस्टेंस है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, s इक्वल्स टू qt प्लस हाफ gt स्क्वायर. सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन इसमें ऐड कर रहा है, उसका वेट उस वाटर पर नीचे क्यों आ रहा है, थ्रू द बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज वेट ऑफ द वाटर, एंड द एक्सीलरेशन इज g. व्हाट इज s फॉर फर्स्ट केस, that is 1.5 plus 0.5, that is 1.5 plus 0.5, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 जब वो स्टार्ट करता है, प्लस हाफ टी टी1 स्क्वायर.
From here, you will find T1 as under root 2 into 2 by, and that T1 will come as 2 by root C, 2 divided by root 1.81. That is 0.638 second, 0.638. राइट, ऐसे आपका जो T2 हो जाएगा, that T2 will be under root 0.5 into 2. दूसरे के लिए इक्वेशन लगा दो, चलो ऐसे दूसरे के लिए इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस 1 पॉइंट, जो वर्टिकल डिस्टेंस है 0.5 इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ g T2 square. From here you will get T2 as 2 into 0.5 by g, and that is under root. Point 0.31, 0.31, 0.319. Okay, 0.319 second and 0.638. ये मिल गया आपका T1 एंड T2. जब जब दोनों स्ट्राइक करते हैं, जब दोनों जेट स्ट्राइक कर रहे हैं, उस टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये दोनों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है, दोनों की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो सेम है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय both jet at point of intersection, at point of intersection, at point of intersection, that is v1 and t1 distance, horizontal velocity is v1 and t1 equals to t2 and t2. मैंने आपको बताया था इन द चैप्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रोजेक्टाइल का टॉपिक है, ये जो v1 है और ये जो v2 है, दैट इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड दैट विल बी कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, एंड दैट इज वेट ऑफ द जेट. जो भी लिक्विड जेट है उसका वेट है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड. बाकी कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v1 v2 वो कांस्टेंट होगी. तो t1 टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज v1 t1 एंड v2 v1 t1 एंड v2. व्हाट इज v1? अंडर रूट 2g h minus 2gh minus 2 into t1. What is v2? Under root 2g h minus 0.5 into t1 t2 आपको नोन है, सिर्फ h. अब t1 t2 अंडर रूट 2g कैंसिल हो जाएगा, t1 t2 आपको नोन है. You can simply find here, you can simply solve the h from here. ये v1 कहाँ से है, v1 equals to जो v है, v square equals to u square plus 2g, 2g जो जीरो है, दैट इज v इक्वल्स टू अंडर रूट 2g. ये आपको मिल जाता है. तो जो पहले वाले की हाइट है, दैट इज टोटल हाइट h माइनस दिस साइड 0.5 प्लस 1.5. जो 1 की हाइट है, दिस 1 की हाइट कितनी है, h माइनस 0.5 प्लस 1.5. जो 2 की हाइट है, h2 की हाइट है, दैट इज h माइनस पॉइंट. तो सिंपली आपको यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कांसेप्ट है, वो भी आपको पता होना चाहिए. दोनों को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होगी. क्यों? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल. अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, दैट विल बी कांस्टेंट. तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 t1 कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 t1 कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 t1 अगर कांस्टेंट है, तो आप
The distance we find कर we want to h find कर लेंगे. And what will be the h? That is 2.5 meter. H is 2.5. From here you will find h, and that will come out as 2.5 means 2.5. That is 2.5. Let's move towards the next one. कोई तीन रोटेशनल फ्लो है. दो टाइप फ्लो मैंने बताया था आपका. एक तो फ्लो होता है कर्ड पाथ में, और एक होता है आपका, एंड दिस इज जस्ट वोर्टेक्स मोशन. वोर्टेक्स मोशन आपका फ्री रोटेशन रोटेशन दोनों हो सकता है. रोटेशनल फ्लो का मतलब ये होता है कि जो भी पार्टिकल है, जो भी आपने पार्टिकल लिया है, जो भी फ्लूइड पार्टिकल है, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, दिस पार्टिकल विल फ्लो लाइक दिस. ये जो पार्टिकल है, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता हुआ फ्लो करेगा. दिस पार्टिकल विल फ्लो अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ. जो भी फ्लूइड का पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट ये रोटेट करता हुआ फ्लो करेगा. अगर ये जीरो रहता है, तो दैट मीन्स द पार्टिकल इज द फ्लो इज, दैट सिंपली मीन्स फ्लो इज. Now here, okay, let us find next question. Let us solve this. Try to solve this question.